आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये क्यू के ऊपर है। पिछला जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो स्टैक के ऊपर था। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि लीफो स्ट्रक्चर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि क्यू जो है वो फीफो स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ियों का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और बेसिकली अगर हम स्टैक की क्यू अगर क्यू की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो क्यू कहता है बेसिकली कि क्यू एक ऐसा होमोजीनियस collection of elements है। याद रखिएगा, Q is a homogeneous collection of elements in which the elements are insert at one end and removed from another end. This is called a queue. The end that is used for the insertion of data is called rear end, and the end that is used to remove from the element the end that is used to remove the value from the queue is known as front end. दो एंड होते हैं जी। द फर्स्ट वन इज द रेयर एंड द सेकंड वन इज फ्रंट एंड। रेयर एंड इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू एंड द फ्रंट एंड इज यूज्ड टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द क्यू। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जैसे सिनेमा में टिकट लेने के लिए, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि आपके पास सिनेमा में जो लोग खड़े हैं उनको अगर वो पिक्चर लेते हैं टिकट के लिए तो एक कतार बनती है। इसी तरह फीस सबमिट करवाने के लिए जैसे आप एक क्यू में लगते हैं, तो क्यू का कॉन्सेप्ट ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में। होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और सेकंड वन ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आगे मूव करते हैं। The queues are linear data structure in which we add the elements from one and remove from. You can see that the insert at this end is called the rear end and the removing from the element in the queue is known as the front end. इसके भी तीन primitive operation and the first one is insert the value into the queue is called enqueue, ये लिखा भी हुआ है। And the second operation to remove the value from the queue, this is called the dequeue, and the third one is empty. So what will be the basic operation? Let's see. So you can see there if there is a no element, like if there is no element, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे example के तौर पे आपको बताना चाहूँ, if there is no element in the queue, then always must be remember what will be the value, what will be the indexes of the rear and the front. अब ये चीज याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, listen, कि same as it is as a top, you can see कि the values are inserted by the rear end, so we must be locate the rear with -1. Why? क्योंकि rear पर insertion होती है। And what about the front end? Whether we can define the both as -1? नहीं, हम front को 1 पर रख देंगे। It means it shows that there is no value, and if we insert a value then the first value is removed from the this end, and this end is according to raise element of 0 index। कुछ इस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। So when we insert the value, then the both ends are equals at first index, then rears become up and up and up if we insert the value into the queue. जैसे ही remove करते हैं, you can see the fronts upward and it remove the value A from the queue and then increased at level second level, that is B.